Good afternoon. What a rare privilege being in Patna. I'm having bad throat, so please forgive if I'm not audible. I'm sitting with my fellow colleagues and dear friends, and for the first time, we all are meeting in Patna. This itself marks the success of this program, that the new generation of Biharis are meeting in Patna for first time. Starting with the central theme, unspooling the stories from Bihar, we have three great chroniclers of the words, two prominent journalists, one poet and diplomat. I will start from my right side. Abhay, how does it mean to you, the Bihar story first? So I'm the editor of the book of Bihari literature, which has stories, basically poems and short stories from Bihar, uh, spanning over a period of 2,600 years. It begins with two poems by Buddhist nuns, Sumangal Mata and Mutta, and ends with poems on Nalanda. It has stories from Sarhapa, from Vatsyayana, from Chanakya. It also has a story from the well-known writers from Bihar, writing in various languages of Bihar. Actually, the book has stories from many translated for the first time in English, from Maghi, Angika, Bajika, Bhojpuri, Mathili, Urdu, Farsi, Sanskrit, Pali, and presents these stories to the English-speaking world. Most of them have been translated for the first time. The translators include various writers and poets from Bihar, but also people who are not from here. And these stories I have discovered have universal resonance, and they truly appeal to people across the world. And I think that's one remarkable thing I have found. And as you say, as you see the cover of the book, which has a dressing table and a parrot. So these come from two stories. One is a story called The Dressing Table by Shamuel Ahmed, and another is a story called The Hindu Parrot, which I think the previous session Praveen ji was discussing. So that's what makes the cover of the book. So it's in brief, Yep. Hailing from Bihar and being a diplomat, you have been to the world many times. What is your outside-in perspective about your home state? What's outside? Your outside-in perspective, your personal thought about the state. Well, I feel very proud of Bihar, and I come from Rajgir, from Nalanda, and even more proud of being from Nalanda. So actually, I'll just read a poem called Nalanda, which is which says all about my feelings, about the state and Nalanda. So this is. So I talk about what happened to Nalanda, and Nalanda is here symbolic. It's not just the physical Nalanda, but also what Nalanda means. The day of massacre at Nalanda. Bakhtiar and his men play buzkashi in my alleys today. Monks are being burned alive, and those who try to escape are beheaded. Dharmaganj, the 9-storied library, has burst into flames. Smoke and ash from the burning books have turned the day into night. The sun has disappeared from the sky today, and even my bricks bleed. The sacred chants that once sanctified Magad have turned into shrieks of a failing humanity. The light of the world is fading today.
to face the ravages of time alone, abandoned, forgotten, or perhaps to be reborn into many Nalandas. And then I have this very proud feeling. Last week I was at this new Nalanda University, which is called Nalanda University in Rajgir, and I saw the Nalanda University coming up again. And here's the rise of Nalanda. Forlorn under the red earth, buried for centuries, I rise today like a phoenix, 800 years later, from the ashes of my burnt books. I open my arms today to embrace you. Whoever you are, from wherever you are, come, walk into my enlightened fold, as once Buddha and Mahavir did, seeking shelter in my groves. I remember Zhuansang and Itsing, the scent seekers from the east. I hear footsteps of Aryabhat and Charak in my ancient compound today. You too come. Come. As I rise again. Thank you. Thank you, Abhay. We will connect more dots once we will progress ahead. Chinki, you have been writing about Bihar, and of course I have been one of the loyal readers. So, what is the new story from Bihar? We'll reveal it. The new story from Bihar, जो पहले बिहार था अब झारखंड हो गया है. हम लोग एक पूरा इशू मिक्लुस्कीगंज के ऊपर लेके आ रहे हैं. और बचपन से सुना था मिक्लुस्कीगंज का नाम, गए नहीं थे. पिछले साल एक बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए. और वहाँ जो कहानियाँ हैं बहुत अच्छी कहानियाँ हैं और उनको कहना चाहिए. आई थिंक विकास झा जी ने किताब लिखी है, लेकिन उसके अलावे कोई ख़ास मतलब लिखा नहीं गया उस जगह के बारे में. उस जगह की वो ख़ास बात ये है कि वो सिर्फ एंग्लो इंडियन आइडेंटिटी के ऊपर नहीं है. इट्स ऑल्सो अबाउट people, loss, geography. You know, there's this sadness of geography that Michael Ondaatje talks about. And, you know, Alison Blunt has written a very interesting book about homeland and making. And this whole thing of nostalgia, I think बिहार से बहुत सारे जो लोग हैं वो nostalgia से बहुत ग्रसित हैं. वो बार-बार आपकी किताब भी हम मतलब पढ़ रहे थे. और उसमें एक बस छोटा सा शिकायत था कि महिलाओं का ज़्यादा स्टोरी नहीं है. तो आई थिंक कि थोड़ा सा और बहुत मतलब वो जो जैसे चूँकि हम लोग आउटलुक में है देखते हैं कि बहुत लोग यंग वॉइसेस बहुत हैं जो कंटेम्प्रेरी बिहार है उसकी. आई मीन दिस बुक इज़ ऑल्सो अबाउट जोग्राफी इन अ वे. आई मीन लिटरेचर स्पेस लिटरेचर यू नो और स्पेस लिटरेचर स्पेस. सो आई थिंक वो बट एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है. ऐसी एंथोलॉजी है नहीं. सो आई थिंक कि थैंक यू फॉर राइटिंग इट. नहीं, इसमें देखिए करीब 60 पोएम्स और स्टोरीज हैं जिसमें 10 जो हैं महिलाओं की हैं. वो जो हमारी एडिटर थी हार्पर कॉलिंस में, वो उन्होंने पहले ही मुझे कहा था कि आप महिलाओं को जो है पूरी जगह दें. तो मैंने मतलब पूरी कोशिश की है इसमें. और इसमें बहुत अमेजिंग स्टोरीज हैं महिलाओं की. जैसे बुक की शुरुआत ही महिलाओं से होती है, 2 बुद्धिस्ट नन से होती है. और उसके अलावा जो इसमें कहानियाँ हैं, इसमें उषा किरण खान जी की कहानी है, वो यहाँ है हमारे साथ. उसमें जो है एक बहुत अनामिका हैं, वो शायद यहाँ हैं या नहीं. उसमें जो है वो सबिता विभा रानी हैं, सबिता हैं, सबिता सिंह हैं, कविता हैं एक, जिनकी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी. वो कहानी एक ऐसी माँ की कहानी है जो बूढ़ी हो जाती हैं और वो शादी करना चाहती हैं क्योंकि वो जो है वो अकेलापन महसूस करती हैं और वो विधवा हो जाती हैं, अकेलापन महसूस. उनके कोई भी बच्चे जो है उनके इस डिसीजन का सपोर्ट नहीं करते. केवल उनकी जो बेटी है वो इसका समर्थन करती है. और वो भी कि अब उसके उनका भी जो विवाह है वो भी मतलब शायद बच्चे या ना बच्चे, क्योंकि उनके हस्बैंड जो हैं वो भी उसको सपोर्ट नहीं करते. तो पूरा वो कहती हैं अपने भाइयों से, उनके 4 भाई हैं, कि आपकी जब आप बच्चे थे तो माँ ने आपकी हर इच्छाएं पूरी की. अब माँ की सिर्फ एक इच्छा है
उसको आप उस पे भी आपको एतराज़ है। तो और भी कहानियाँ हैं जो जो मुझे मतलब और भी महिलाओं की कहानियाँ हैं इसमें, तो ये पर्टिकुलरली मुझे बड़ी नहीं, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगली और बार हो आप सकता करिए तो एक और नया बुक निकालिए। Precisely, you should come out with another book very, very soon, and you have potential writers, top writers, Priyanka Sinha, Madana ji, so many writers, Suyata ma'am, Usha Kiran, so many people. मैंने ये पब्लिशर को कहा है हार्पर कॉलिंस को कि आप एक और किताब के लिए मुझे मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें। Publishing is never a problem, Abhay. Anyway. क्योंकि बहुत सारे, जैसे देखिए यहाँ पे भी मुझे, मैंने ये पूरी किताब जो है ना मैडागास्कर में बैठ करके किया है। वो पूरा किताब जो है ना मैंने 2 साल में पैंडेमिक के दौरान किया है, और ना किसी से, मैं किसी को भी नहीं जानता था। एक्चुअली देखिए आपको ना मैं एक कविता पढ़ देता हूँ। मेरा जो लेवल ऑफ अवेयरनेस था वो एकदम जीरो था बिहारी लिटरेचर तो छोड़ दीजिए, मगही लिटरेचर के बारे में, क्योंकि मैं नालंदा से हूँ और मगही, मेरी मम्मी जो है वो मगही बोलती हैं। तो एक मैंने कविता, ये कैसे किताब बनी वो उसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए। तो मैंने क्या किया कि एक मगही में कोई किताब ही नहीं मिलती थी मुझे, तो मैंने एक सोचा कि एक कविता लिख देता हूँ इस पर। मैंने लिख दिया कविता, और वो अंग्रेजी में छपी। सरप्राइज टू लर्न दैट देयर इज नो रिटन पोएम इन मगही, आई रन हियर एंड देयर देन सिट डाउन टू राइट अ पोएम इन मगही, आई लिसन टू द पीपल इन द स्ट्रीट टॉकिंग इन मगही, paying attention to their sounds and tones in Maghi. They twitter like birds day and night in Maghi. Even their abuses sound sweet in Maghi. ठीक है is ठीक हको, अच्छा आ गया is अच्छा आ गेलहू in Maghi. खाना खाए is खाना खेलहू, चाय पिए is चाय पिलहू in Maghi. I go around the town looking for books in Maghi. I return home without finding a written word in Maghi. At home I hear my mother say her prayers in Maghi. हमार बेटा के बुद्धि देहु भगवान. He wants to write a poem in Maghi. Excellent, very good. This is the story. So when the poem was published, I started getting these like flurry of emails and messages that you have no idea how many poems are there in Maghi and how many books are there. And that's how I started asking them that please tell me which are the books and which are the poems. And I did the same thing for other languages, Hindi, Urdu, Angika, Bajjika, all sitting there in the capital of Madagascar, which is known as Antananarivo, and calling people from there and so on. And that's how this book came out. And I think somewhere my literary agent is here. Kanishko, are you around? Or he has left? So basically, I wanted him. You got your point. You are Yeah. coming out with a new book very, very soon. Okay. Santosh, first, many congratulations for this new book. And you have been active, really, really active. For last 20 years almost, I have been reading your writing. Yeah, but you're informally more than that. So how does it feel to you to be on daily hunt for news stories from Bihar? It's not an easy task for sure, getting the stories from Bihar. And of your kind. It's very difficult to say in one sentence what kind of a story I would like to do. Basically, rather than a journalist, I would love to call myself a reporter who should hit the ground when something happens. I would revisit my one COVID story. I think in last 1 year, I have done only 2 stories which worth recalling. One of them is COVID story, which got Indian Express Investigative Journalism Award. And how you can get a story? I got a call from one of my relatives, and he said that COVID data is being first, and anybody can register his number, and that person is not tested, but his phone number is there. Then I said, can you get my number there? In one day, he did exactly the same with my number, and name against my number was some Bachan Kumar Singh, something like that, some fixes number. That is how I started approaching the story. I got some basic data from 3-4 districts.
in 2 days, in say some 12, 13 hours, I called some 700 numbers. Some of them, of course, didn't exist. Then the story of data fuzzing. Then I wondered how with the same infrastructure, the same system was just testing 50,000 per day. Now the same system with same capacity is testing 1.5 lakh per day. So stories for me, for Bihar, it's open-ended and it doesn't look good that my book is launched in Hindi and I am speaking in English. So I will, I will switch to Hindi and keep the tempo of Abhay ke. He talked about his poetry. For the sense of Bihar pride, to nullify all the negatives, I start my book with a poem, and which is called Main Bihar Hoon. I would not bore you with a long poem. I will just read out few paragraphs that sets the tone, and then it's of course about it's a story of detailed story of Lalu Prasad Yadav, Nitish Kumar, Ramvilas Paswan, Jitan Ram Manjhi, and of course the rise of BJP in between. And I have also told a story from Dr. Sri Krishna Singh to Lalu Prasad in one chapter. The chapter is called Sadakat Ashram se Veer Chand Patel tak. The first, the Bihar story. Just 3-4 paragraph I would read out. मैं ही सीता की धरा हूँ, विदेह जनक की देह हूँ, मैं ही रश्मि रथी कर्ण हूँ, गौतम ऋषि का आश्रम हूँ, अहल्या का कायाकल्प हूँ, मैं अशोक का स्तंभ हूँ, चाणक्य की कुटिल प्रज्ञा हूँ, लोकतंत्र की जननी वैशाली हूँ, मैं आर्यभट्ट भी हूँ, मैं ही तारेगना हूँ, मैं मगध भी हूँ, मैं पाटलिपुत्र हूँ, मैं नालंदा हूँ, विक्रमशिला हूँ, तिलका मांझी हूँ, गुरु गोविंद सिंह हूँ, कुंवर सिंह भी हूँ, मैं भिखारी ठाकुर हूँ, महेंद्र मिश्र भी हूँ, मंडन मिश्र हूँ, विद्यापति हूँ, दिनकर हूँ. I'll just read the skip and read the political content which would interest you as well. समाजवादी बिखरी धारा हूँ, हरा गेरुआ का मिलन हूँ, लालू प्रसाद भी हूँ, मंडल मसीहा हूँ, गरीब गुरवा की आवाज़ हूँ, उनका राजनीतिक प्रमाद भी हूँ, पिछड़ेपन का गहरा अवसाद भी हूँ, नीतीश कुमार तो हूँ ही, बिहार का बहुत कुछ कायाकल्प हूँ, सुशासन का संकल्प हूँ, उनकी राजनीति का तिलस्म हूँ, उनका व्यवहारिक समाजवाद हूँ, बिहार और बनाव का अंतर्द्वंद हूँ, मैं सरदार पटेल भवन भी हूँ, बापू सभागार भी हूँ, सविता द्वार भी, रामविलास का छोटा आसमान हूँ, दलित राजनीति में उलझा पासवान हूँ, जगजीवन राम का अधूरा प्रयास हूँ, दलित सत्ता हस्तांतरण की आस हूँ, कैलाशपति मिश्र का संगठन विस्तार हूँ, गोविंदाचार्य का ओजस्वी विचार हूँ, जनसंघ से भाजपा की अपूर्ण यात्रा हूँ, उनकी सफलता में अटकी नीतीश की मात्रा हूँ, थोड़ा सुशील मोदी भी हूँ, उनकी रक्षात्मक राजनीति का विरोधी हूँ, युवा तेजस्वी के आगमन की आहट हूँ, भाजपा में नेतृत्व उलझन की छटपटाहट हूँ. इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है और आपके पढ़ने के लिए छोड़ता हूँ. लास्ट लाइन जो मैं करता हूँ और बीच में काफ़ी व्यंजन के बारे में लिखा है कि लोग कहते हैं कि बिहार सिर्फ लिट्टी चोखा है, तो मैं सुनाता हूँ कि मैं आत्मनिर्भर हूँ, मैं बस लिट्टी चोखा नहीं हूँ, एक व्यंजन के पहचान का धोखा नहीं हूँ, मैं चंपारण का अहुना हूँ, एक स्वागत योग्य पहुना हूँ, मैं दरभंगा का मखाना हूँ, उत्तर बिहार के लीची का खजाना हूँ, हाजीपुर का केला हूँ, मैं बिहार हूँ, अलवेला हूँ, मैं अंग का रेशम हूँ, परेब का पीतल हूँ, मैं उद्वंत नगर का खुरमा बेलग्रामी हूँ, पिपरा सिलाव का खाजा हूँ, मनेर का लड्डू हूँ, गया का तिलकुट हूँ, धनुआ बाढ़ का लाई हूँ, मिथिला की सकरौरी हूँ, फतुआ की निर्जयी हूँ, रूनी सैदपुर का बालूसाई हूँ, रोहतास के चावल का कटोरा हूँ, भागलपुर की कतरनी हूँ, दिल से पुकारो तो बैतरनी हूँ, मिथिला के 56 व्यंजन का थाल हूँ, बंगाल का संस्कृति द्वार हूँ, मैं भुला दी गई मंजूषा हूँ, मिथिला की अद्भुत चित्रकला हूँ, शारदा सिन्हा का छठ गीत हूँ, अस्ताचल गाँव में सूर्य को भी नमन हूँ, सच है मैं कोसी का टूटता कछार हूँ, बाढ़ का बरबस प्रहार हूँ, पर मैं गंगा का उद्गार भी हूँ, मैं अब भी बुद्ध महावीर का विचार हूँ, क्योंकि मैं बिहार हूँ. यही बिहार है. No one can have any complaint now. Santosh, very briefly, now we have about 3-4 minutes left. Can you please tell us about your new book? Possibly you are writing something on. Should I say or you will? I would love to tell about my book. Of course, that book is in English, so I can afford to speak in English in this segment. I am attempting to write a biography of Karpuri Thakur. Some books in Hindi, of course, written on him, but there is no English work.
no, authentic English work, not even a single English word, not to talk of an authentic English work. So it is not just the biography of one person, that is the biography of the entire time. I'm talking about Triveni Sangh, I'm talking about Janevu Andolan, I'm talking about Sajanand Saraswati, I'm talking about the journey from CSP, Congress Socialist Party, to Sanjukta Socialist Party, to Janata Dal, and its various variants. So it's in 14 chapters. I think I have set a noon deadline for myself to complete the book. I hope it should come good in 14 chapters. And the first chapter, I call it from Petrograd to Pitonjia. Pitonjia, which is Karpuri Gram now, is paternal village of Karpuri. Yes. Chinki, last question from you. What is your plan in long form writing? I couldn't hear properly. What is your plan in writing a book on behalf? My plan in writing, I mean, I've been trying for the last 10 years, collecting stories यहाँ से वहाँ से. मेरे खुद के नाना जी का घर था आरा में. And when I was reading your book, actually, I got reminded, you know, जो वो dressing table का जो आप जिक्र करते हैं, वो मुजफ्फरपुर में मैंने वैसा देखा है जो मुझे जो करती हैं उनके वहाँ पे. And I think बिहार में इतनी सारी कहानियाँ हैं. That's why I'm saying कि the anthology is very interesting in terms of, you know, getting out all these stories. But there are so many more actually. But I always get afraid because people are doing such good work. पता नहीं मेरा किताब डूबेगा नहीं डूबेगा. लेकिन I have to put it on it. And I think now I have commitment of 3 books on behalf. oh, from Abhay, you and Santosh. yeah, मेरा में तो 10 साल लग जाएगा. Okay. So thank you very much. Now we can end it here.